So guys, welcome back to my channel Bonoshree Educative Classes. It's me Bonoshree, and if you're new to my channel, please to subscribe my channel and press the bell icon to receive the notification at the earliest. गाइस, इससे पहले की वीडियोस पे मैंने इंडियन इकोनॉमी ऑफ क्लास 12 का चैप्टर 2 का पार्ट 1 अपलोड कर दिया है एंड इफ़ यू हैव नॉट वॉच इट टिल नाउ प्लीज़ टू चेक इट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो उस वीडियो में मैंने ऑलरेडी 4 टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर को डिस्कस कर दिया है। सो आज बाकी के रेस्ट 3 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे गाइस। दैट इज़ फर्स्ट इज़ द फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991. Second topic is our achievements of planning. Third, failures of planning. So let's not waste our time and start with our first topic, that is the features of economic 1991. So first feature is the heavy reliance on public sector. Economic policy prior to 1991 indicated heavy reliance on public sector. गाइस, जो इकोनॉमिक पॉलिसी बनाया गया था बाय द प्लानिंग कमीशन इन 1991, उसमें क्या किया गया था, ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंट कौन से सेक्टर पे थे? ऑन द पब्लिक सेक्टर. सो पब्लिक सेक्टर इज़ जनरली अ सेक्टर विच इज़ बीन कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री. तो उनके अंडर पे ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए थे. थर्स, इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ 1956, 17 industries were reserved for public sector and 12 industries were earmarked for private sector. इंडस्ट्री रिजोल्यूशन पॉलिसी रिजोल्यूशन निकाला गया था इन 1956. उसके अंडर पे 17 इंडस्ट्रीज़ को पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व किया गया था और 12 इंडस्ट्रीज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर. It was realized that the objective of socialistic pattern of society could only be achieved through a comprehensive development of public sector enterprises. तो गाइस, सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है, जो आप सबको पहले से ही पता है कि जो पब्लिक सेक्टर है उसका मेन मोटिव क्या होता है? इट्स द मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर. ऑन द अदर हैंड प्राइवेट सेक्टर का मोटिव होता है टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट. मेन मोटिव इज़ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. तो प्लानिंग कमीशन ने ये फैक्ट को रियलाइज़ किया कि उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था पॉलिसी का ऑफ 1991 वो था सोशलिस्टिक डेवलपमेंट. और वो तभी हो सकता है जब वी विल बी मोर डिपेंडेंट अपॉन द पब्लिक सेक्टर बिकॉज द मोटिव इज़ टू इंक्रीज द पब्लिक वेलफेयर. सेकेंड इज़ द रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर. According to the Industrial Development and Regulation Act of 1948, new industry in the private sector could not be established without a license and registration. तो जैसे कि उन लोग पब्लिक सेक्टर पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए तो उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को रेस्ट्रिक्ट कर दिया था गाइस, उस पर कम डिपेंडेंट होने लगे. तो अगर अभी इस टाइम में एक एक्ट निकाला गया था ऑन 1948, दैट वाज द इंडस्ट्रियल एक्ट. इसमें क्या किया गया कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर तभी इस्टेब्लिश हो सकता है अगर उन्हें गवर्नमेंट से लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन मिल चुका है. अदरवाइज दे कुड नॉट स्टैब्लिश विदाउट द कंसल्टेशन एंड परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट. Similarly, Monopolies and Restrictive Trade Practices Act of 1969 placed several restrictions on the expansion of existing industries in the private sector. Different acts निकाले गए guys, like the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act of 1969. इससे क्या हो रहा था कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो अपना सेक्टर को ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर पा रहे थे because they were being restricted by different acts. Regulated development of private sector was to ensure that there was no concentration of economic power in the private hands. Main motive इसके पीछे क्या था guys? गवर्नमेंट ये इंश्योर करना चाह रहा था कि कम से कम पावर प्राइवेट सेक्टर के पास हो और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग किस पे डिपेंड हो? ऑन दी पब्लिक सेक्टर. Third is the protection of small scale industry and regulation of large scale industry.
Large-scale industries was regulated through several acts, particularly MRTP, that was the Monopolistic and Restricted Trade Practices Act. Small-scale industries, on the other hand, was offered protection from competition. तो गाइस जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ थे उसको भी रेगुलेट किया गया थ्रू डिफरेंट एक्ट्स, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को फॉरेन कंपटीशन से बचाया जा रहा था उस टाइम. दे वर बीन प्रोटेक्टेड फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन. नेक्स्ट इज द प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन. डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ वॉज प्रोटेक्टेड फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन. जैसे कि मैंने बताया कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट उस टाइम फॉरेन कंपटीशन से बचाते थे. हाई इम्पोर्ट ड्यूटीज़ एंड क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस वे लीविड ऑन इम्पोर्ट्स. और ये कैसे किया जाता था गाइस? हाई अमाउंट ऑफ ड्यूटी और टैक्स लगाया जाता था ऑन इम्पोर्ट्स, और रेस्ट्रिक्शंस, बहुत से ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस, कस्टम्स एंड ड्यूटीज़ लगाए गए थे ऑन द इम्पोर्ट्स. नेक्स्ट इज द फोकस ऑन इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन. It implied domestic production of goods which were imported from abroad. The basic idea is to save foreign exchange and become self-sufficient. तो अब क्या फोकस कर रहा था गवर्नमेंट? प्लानिंग कमीशन इस चीज़ पे फोकस कर रहे थे कि अभी कम से कम गुड्स हम लोग अब्रॉड से इंपोर्ट करें और खुद से ही, मतलब वी शुड बिकम सेल्फ सफिशिएंट. We must become that capable so that we can produce all our goods within our country, and there would be no need to import the basic necessities from abroad. So let's move to our second topic, that is the success or the achievements of planning. First is the increase in national income. So सबसे पहले what is national income? National income is generally the sum total of the factor income earned by the normal residents of the country during the period of an अकाउंटिंग ईयर. तो इस टाइम में सबसे पहला सक्सेस और अचीवमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी जो 1991 में बनाया गया था उसका क्या था? दैट इट हेल्प इन इंक्रीजिंग द नेशनल इनकम ऑफ आवर कंट्री. Increase in national income generally indicates the economic growth. In this context, following observations need to be noted. During the period prior to planning, national income of India increased at the rate of just 0.5% per annum. Indian economy was therefore a stagnant economy. तो गाइस, जैसे कि मैंने पहले भी आप सबको एक्सप्लेन किया था कि ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड क्या था? There was no growth and development in India. India was just a stagnant country. 0% of development was there. So, और ये पॉलिसी के आने के बाद क्या हुआ? देयर वॉज इंक्रीज इन नेशनल इनकम ड्यूरिंग द फर्स्ट प्लान दैट वॉज ऑफ 4.6% पर एनम अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 2.1% पर एनम. तो आप देख सकते हैं जो टारगेट बस उन लोगों ने फर्स्ट प्लान में क्या सेटअप किया था, ओनली फॉर 2.1%, बट दे एक्सीडेड देयर टारगेट एंड इट वॉज 4.6% पर एनम. Between the second and the 10th plan, the target was raised by 5% per annum, but the targets was achieved only between 5th and 10th plan. तो जो 5% का टारगेट दिया गया था वो कब अचीव हुआ? इट वॉज बिटवीन 5th and 10th plan. Increase in national income during the 11th plan was 7.5% against the target of 9%. तो उस टाइम थोड़ा टारगेट उन लोग ने ज़्यादा सेटअप किया था, that was of 9%, but they could achieve only 7.5%. And national income increase during the 12th plan was 6.7 against the target of 8%. तो भले ही इस टाइम में क्या हो रहा था, टारगेट मैच नहीं हो रहा था, बट देयर वॉज डेवलपमेंट, देयर वॉज इंक्रीज इन नेशनल इनकम. वी कैन नॉट डिनाई दैट फैक्ट. ओके, आप लोग देख सकते हैं कि एक स्टैगनेंट इकोनॉमी से टूवर्ड्स दी डेवलपमेंट की तरफ जाने में बहुत बहुत मेहनत चाहिए होता है गाइस. उसके पीछे बहुत कुछ करना पड़ता है, दैन वी कैन रीच इन सच अमाउंट. तो इससे भले ही उन लोग टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे थे, बट देयर वॉज इंक्रीज. वी कैन नॉट डिनाई दैट फैक्ट. सो during most plans we failed to achieve the targeted rate of growth, yet a deadlock was broken, a deadlock of economic stagnation of the Indian economy prior to independence. Means now the India was no more a stagnant country. Means ऐसे नहीं बोल सकते कि there was only just 0% of growth and development, but it tend to increase now. It started increasing and it started improving. So there was development. So it could be the success of the economic policy of 1990. Second is the rise in savings and investment. During the first 5-year plans, there has been a considerable increase in the rate of saving and investment.
In 1950 to 51, rate of saving was 9.5% of national income. It increased to 31.3% by the end of 11th plan, that was from 2011 to 12, and was estimated to be 32.3% in 2015 and 16. So you could see the difference. So it was generally been increasing, it was not falling down. So there was rise in saving and investment. The rate of investment has risen from 9.3% of GDP to 33.3% in 2015 to 16. So see the gap between them. 1950 और 51 में कितना था? It was just 9.3%. But towards the 2015 to 16, it tend to increase 33.3%. So you could see the difference. So economic policy ने क्या किया था of 1991? It helped in increasing our savings and investment. As saving and investment क्या है? They are only the principal drivers of economic growth. इन लोग chief motive है, chief source है, जिससे we could increase our economic growth of the country. Third is the economic infrastructure, means of transport, communication, irrigation facilities, power generation capacity, banking, insurance facilities are the key elements of economic infrastructure. So in सब areas में अब development होने लगे. There was development in the economic infrastructure of our country after the coming of the economic policy of 1991. During planning, economic infrastructure has recorded a significant growth. Indian Railways has now become one of the world's largest railway network. Indian Railways बहुत अच्छी तरीके से उस टाइम फ्लोरिश किया जा रहा था. It was been established in a better way, और ये it provided a means of transportation and communication. Installed power generation capacity was 2300 MW in 1950 to 51, and it increased to 3,30,861 MW in 2017. So you could see the progress. A revolutionary growth of IT sector has earned India the designation of global player in the international market. So economic infrastructure इन सब के अलावा भी there was growth in IT sector, means the information technology. उसमें भी अभी growth देखने को मिल रहा था उस time, और it became a global player in the international market. Fourth was the unemployment. Serious effort were being made during the plans to increase employment opportunities. तो उस टाइम में मेन मोटिव क्या था प्लानिंग कमीशन का? टू इरिगेट, मीन्स टू एलिमिनेट पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री एंड मेक डिफरेंट ways to increase the employment opportunities of our country. So in different 5-year plans, government has launched several employment schemes. तो 5-year plans के दौरान गवर्नमेंट ने बहुत सारे employment schemes को लॉन्च किए. During the 11th plan, employment rate came down from 8.3% in 2004 to 5.6% in 2011 to 12. So it was been deteriorating, means the unemployment rate was decreasing. In the 12th 5-year plan, government has fixed the target of creating 50 million employment opportunities. You could see government too was making initiatives so that they could remove the poverty जो है, they could remove it from our country and create 50 million employment opportunities. Fifth is the international trade. During plans, the volume and value of the India's foreign trade have increased. In 1948 to 49, the value of foreign trade was 792 crore. It increased to 40,31,719 crore in 2016 to 17. You could see the growth. You could make out the difference, okay? Composition of export and import has significantly changed. पहले के टाइम में क्या होता था guys? During the colonial period, India generally क्या import करता था? They used to import the basic necessities, means they used to import the finished products, and they used to export the raw materials and all to other countries. And earlier, India was not at all sufficient and capable to produce a manufactured good or finished goods. उसके लिए उन लोग depend होते थे for dependent upon the goods from abroad. यहाँ तक कि basic essential items भी उन लोग को import करना होता था. So you could see. But अभी ये जो structure था, it began to change. Prior to planning, we were largely exporting primary products. But now the pattern is gradually reversed. And we just imported the finished good. But now it has been changed.
The change in composition is significantly marked in the era of exports. We are now exporting engineering goods. So you could see the progress. Abhi we are exporting engineering goods. So this is a sign of India emerging as an industrial nation. In short, Indian economy has recorded a significant growth only along with a significant structural change during the period of planning. So now Indian economy was making a significant increase in growth and development. The change is happening all sectors of the economy. सिर्फ एक ही sector पे limited नहीं था. It spreaded throughout every sectors of our economy. Also growth is being reflected in the higher and higher standard of living. Now the standard of living of the people also tend to increase, guys. However, there was a certain dark spot pointing to the failures of planning in India. This is what we discuss in the following section. भले इसमें बहुत मतलब हर चीज़ का तो दो साइडेड होता ही है ना गाइस. एवरीथिंग हैज सम और द अदर फेलियर्स. सक्सेस तो होता है पर साइड बाय साइड देयर इज सम ड्रॉबैक्स, देयर इज सम डिसएडवांटेज ऑफ ईच एंड एवरीथिंग. सो इसके पीछे भी कुछ फेलियर्स थे, बट वी कैन ऑल्सो नॉट इग्नोर द सक्सेस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी. लास्ट टॉपिक दैट इज द फेलियर्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया. फर्स्ट, abject poverty. Alleviation of poverty was the central theme of planning, but this is where we stand. In India, 21.9% of population still lives below the poverty line. तो मेन मोटिव क्या था गाइस इकोनॉमिक प्लानिंग का? टू एलिमिनेट द पॉवर्टी. काफ़ी हद तक दे वर बीन सक्सेसफुल इन एलिमिनेटिंग पॉवर्टी, बट दे कुड नॉट रिमूव पॉवर्टी फुल्ली फ्रॉम आवर कंट्री. ओके, still कितना percentage? 21.9% of population was called as the BPL during that time. So these are those people who were not even getting their essentials of life. So they were unable to get their basic necessities like the food, clothing, shelters and all. Nearly 50% of those who were absolutely poor in the world are living in India. So you could see how अभी भी बहुत जगह पे है देयर इज़ पॉवर्टी. हम लोग अभी तक पूरी तरीके से पॉवर्टी को एलिमिनेट नहीं कर पाए हैं. देयर इज़ टू मच ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, वी कैन नॉट डिनाई इट. देयर इज़ टू मच ऑफ पॉवर्टी, बट some or the other government is still making different schemes, trying a lot to remove the poverty from the country. But suddenly एक बार में तो we cannot do that. So it will gradually take time to remove poverty from our country. So second is the high rate of inflation. By and large, we have failed to tackle inflationary spiral in the country. What is inflation? Means the increase in the price level. Because of high rate of inflation during the 5 years plan, real income of the people has tended to erode. So इस टाइम में इसका और एक ड्रॉबैक क्या था गाइस? There was high rate of inflation. और इससे क्या हो रहा था? The real income of people was also been decreasing. Real income means the purchasing power of the people. Also, economic divide between has tended to rise, and first plan is only exceptions when price levels slided down. In all the other plans, the price tended to record a steep rise. सिर्फ फर्स्ट प्लान में ही क्या था? there was decrease in inflation, but बाकी सारे plans में there was high rate of inflation. Third is the unemployment crisis. While more and more opportunities of employment has been generated, challenge of unemployment has not subsided. जैसे कि मैंने बताया, at the end of first plan, 53 lakhs persons were unemployed. This number rose to over 4 crore at the end of 11th plan. This is emerging to be a serious cause of social unrest, threatening the process of growth. So, India आज तक क्यों है? Why India still is a developing country? अभी तक वो developed country क्यों नहीं बन पाए guys? The main reason is the unemployment in our country. और unemployment के पीछे का reason क्या है? Excessive population growth. India का population growth is very much high. This is only arising poverty and unemployment in our country. Fourth is the inadequate infrastructure. Development of infrastructure including power, roads, dams, bridges, schools, colleges and hospitals continues to be inadequate despite 67 years of planning. Consequently, actual growth has failed to match the targets of growth. Shortage of power has been a serious constraint in the overall process of growth and development. So जैसे कि हमने सक्सेस में ही पढ़ा था, there was a growth in economic infrastructure, but somehow it lagged behind.
एंड इसके पीछे का कारण क्या बताया जा रहा है? शॉर्टेज ऑफ पावर इन आवर कंट्री. Means the resources are not effectively used by a country in a proper way by maintaining the sustainable development. It's been not used properly. Number 5 is the squeeze distribution. Economic and social equality was considered as the principal goal of planning. इकोनॉमिक और सोशल इक्वलिटी को क्या कंसिडर किया गया था एज द प्रिंसिपल गोल ऑफ प्लानिंग. आयरनिकली दिस हैज़ बीन द प्रिंसिपल फेलियर ऑफ प्लानिंग इन इंडिया. Economic or social equality था main objective of planning, but they had failed in it. Widening economic and social inequality has compelled the government to offer reservations in job to the economically and socially weaker sections of the society. तो इसके बाद ही गवर्नमेंट ने रिजर्व कर दिया गया था like for the ST and SC and all seats were been reserved for them in the fields of employment and all. Then for the Dalits some reservations were being kept. Means the STSCs. So this way we came to the ending of this chapter. I hope guys आप सबको समझ में आया है. If my explanation was not enough and you are still having some doubt, please let me know in my comment box. I'll try to solve all of your confusions and clear your doubts. And guys, अगर आपको किसी और टॉपिक में भी वीडियो चाहिए, please let me know. I'll try to make a video on that. And if you have not followed me till now in my Insta ID, please do follow me for more updates. So thank you guys for watching my video. Jai Hind, Jai Bharat.